वेलकम टू हेल्थ बाइक। हेलो गाइस, आज का जो वीडियो है वो एक रिएक्शन वीडियो होने वाला है। तो काफी लोगों ने मेरे को ये वीडियो भेजा बोलते हुए कि प्लीज इस पे रिएक्ट करो। टीआरएस का वीडियो है, लूक कुटिनो इसमें आए हैं और वो 10 मोस्ट कॉमन फैट लॉस मिस्टेक्स बता रहे हैं। पहले इस वीडियो का गोल समझाता हूं मैं आपको। बहुत लोग रणवीर का मजाक उड़ाते हैं, बट मानना पड़ेगा उन्होंने एक बहुत रिप्यूटेड ब्रांड बिल्ड किया है एंड इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्ट बिल्ड किया है। अब लूक जो इनके गेस्ट हैं आज के, वो बहुत टाइम से फिटनेस इंडस्ट्री में हैं एंड इवन दो मैं उनसे काफी चीजों में डिसएग्री करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस वीडियो में हम उनको डिसरिस्पेक्ट करेंगे। इनफैक्ट ये वीडियो मैं पहली बार आपके साथ अभी देखने वाला हूं एंड साथ में रिएक्ट करने वाला हूं। अगर मुझे उनकी बातों में कुछ भी गलत या अजीब लगता है, स्टडीज को उठा के, फैक्ट्स को उठा के हम उसको वेरीफाई करेंगे एंड करेक्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। Top 10 mistakes that Mr. Luke Coutinho has seen when it comes to weight loss related cases. मुझे समझ नहीं आता है रणवीर ऐसे क्यों बात करता है इतना फॉर्मल होके। You wanna talk about 10 common mistakes you see in India? Or actually, you have international clients, so I'm sure you see some mistakes all over the world. Yeah, so I think, again, I'm a fan of perception because I believe our mind decides right then what's right, what's wrong. So number one, it's not weight loss. We say fat loss. Okay, aim to lose fat, burn fat, not weight, because you could be losing muscle mass, you could be losing bone density, or you could just be losing water and you'll be like, hey, my weight's going down, but you have a bigger problem. So weight loss alarms me, fat loss inspires. ये बिल्कुल सही बोला इन्होंने। I also talked about this a few times। मेरे वीडियोस अगर आप पहले से देखते आ रहे हो, आपको पता है मैं कितनी बार बोलता हूँ ये। Weight is not a good indicator of health। अगर आप फैट लूज कर रहे हो अपनी बॉडी में, दैट इज अ गुड इंडिकेटर। अगर आपने एक दिन पानी कम पिया है या कार्ब्स कम खाए हैं, हो सकता है अगले दिन आपका वेट कम आए, बट जैसे ही आप वो वापस खाओगे उसके अगले दिन फिर से आपका वेट बढ़ जाएगा और आप डिमोटिवेट हो सकते हो। Seeing your weight on the scale is not always a good idea. You say that the mistake is starving yourself or being... Absolutely. People don't know the difference between starving and fasting. So if they try to starve, like they've had a big meal today and they say, I just want to eat for the next 24 hours. Now, you think you're going to lose weight with that, but you're actually becoming more and more deficient in micronutrients that your body actually needs to help you burn that excess fat and the rubbish that you ate. So starvation will slow down your metabolism. It will depress you because you're psychologically depriving. Your survival system depends on energy. You're cutting it out. So that there's going to be a big problem with that. So that's another mistake, starvation. सेकंड मिस्टेक जिसकी ये बात करते हैं वो भी बिल्कुल सही लगी मुझे। ये काफी लोग करते हैं। एक दिन उन्होंने बहुत सारा खाना खा लिया, स्पेशली अगर बाहर का खा लिया, अगले दिन वो कहते हैं मैं फास्ट करने वाला हूं। वो फास्ट जो होता है वो प्रॉपर फास्ट भी नहीं होता, वो लिटरली अपने आप को स्टार्व करते हैं। वो वेट करते हैं कि वो जो फास्ट कर रहे हैं वो कब खत्म होगा कि अगले दिन वो फिर से खाना खा पाए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो जीने के लिए खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम खाने के लिए जीते हैं। उसके वजह से काफी बार हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन्स, मिनरल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यस, बहुत सारे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडीली प्रोसेसेस, नॉर्मल बॉडीली प्रोसेसेस को हेल्प करते हैं एंड अगर वो डेफिशिएंट हुए, हो सकता है मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, ये सारे प्रोसेसेस बहुत स्लो हो जाएं या होए ही नहीं। तो आप मेरा जिंक मैग्नीशियम का वीडियो यहाँ पे देख सकते हो, जिससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। Okay. Number three, how people are doing fasting today. Completely wrong. Okay, fasting also follows a circadian rhythm. You're talking about intermittent fasting. Intermittent fasting, whatever it is. So you start off, try to maintain your timings. Okay. Don't just start off at 8 today and tomorrow it's the weekend, so you'll start at 2 in the morning and then keep changing it because you're actually confusing the biorhythms of your body. भाई रणवीर का मेरे को समझ नहीं आता। मतलब मेरे को समझ आ रहा है मीम्स क्यों बनते हैं, बट मेरे को ये भी लगता है कि ये बंदा बहुत स्मार्ट है, लाइक ही नोज हाउ टू मार्केट हिमसेल्फ। मेरे को तो ये भी लगता है कि वो जान के ये सब करता है कि लोग देखें और उसके क्लिप्स उठा के लाइक मजाक बनाए, सो दैट यू नो द रेलेवेंसी डजंट गो अवे। वेरी स्मार्ट बट ऑल्सो वेरी वियर्ड। The next part is cardio. People. One second. What is biorhythm? Sorry? What is biorhythm? What do you mean by Your biorhythm? biorhythm. So right now, put your hand on your chest. Your heartbeat is a rhythm. Put your hand on your pulse. Rhythm. When you meditate, Ranveer, it's a rhythm. Everything is rhythms. The vibration in the room is a rhythm. Everything's a rhythm. Now I can disrupt the rhythm by getting angry, my heart rate will change. By saying something disrespectful, everyone in this room will change. These are biorhythms. Nature can change my biorhythm. The wind can, temperature, rain, thunder, lightning. We're all biorhythms. That's why we vibrate. They say vibrational frequencies because we're rhythms. Otherwise you can't. You can't vibrate. दिस इज सो ट्रू यार। मतलब जिस लेवल पे ये बातें कर रहे हैं अभी, काफी लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वो मजाक बनाएंगे इनका कि भाई कहाँ पहुंच गया ये बंदा, या क्या फूक के बैठा है, या कुछ ऐसी फालतू चीजें करते हैं लोग। बट टू अ लेवल ही इज ऑल्सो राइट। एज बीइंग्स
वी हैव अ रिदम, हर चीज का सर्केडियन रिदम आपका स्लीप रिदम होता है, हार्ट बीट आपका एक रिदम है जो रोज सेम चलता है. सो दीज आर ऑल रिदम्स. तो जिस तरह ये समझा रहे हैं काफी स्मार्ट है, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर ये थोड़ा डेप्थ में इसके बारे में जा पाए. Can I cut back a little bit in this conversation? I count the first mistake primarily as starving yourself, like starvation. equating. Yeah. The second mistake I would probably say is not maintaining your rhythms. Yes. And that could also be of like what time you sleep and wake up, Yeah. etc. And that's my next point. Sleep deprivation. Okay. If you are sleep deprived and you are struggling to lose weight, it will be a struggle. No matter how clean your diet is and no matter how much you work out. Because we lose fat while we sleep. And lots of modern day professionals complain that they don't get time, but the truth is that time is being taken away by empty scrolling on social media. Absolutely. अब बहुत टाइम से बहुत सारी स्टडीज दिखती हुई आ रही हैं जो बता रही हैं कि कैसे स्लीप का डायरेक्ट रिलेशन है फैट लॉस से. स्लीप अगर आपकी अच्छी नहीं है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, अगर आप ज़्यादा नहीं सो रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं ले रहे, देर आर चांसेस कि आपके जो ग्रेलिन एंड लेप्टिन हार्मोन है जो आपके हंगर पैंग्स को कंट्रोल करते हैं वो डिसरप्ट हो जाएं. आपने देखा है जो लोग ज़्यादा लेट तक जागते हैं वो ज़्यादा स्नैकिंग करते हैं, ज़्यादा कैलोरी इनटेक करते हैं. उसकी वजह से दे टेंड टू गेन मोर वेट एंड स्लीप एंड ओबेसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है इसी के वजह से. I'm yet to find one person, and I take it up as a challenge. When they say I don't have time, I say, okay, sit with me and I can challenge you. I'll give you a free program, okay, if you really don't have time. And I always win. And you work with billionaires as well. Yeah. And we find time for them. They find time. It's not like we do. But simple. Where's this time? Oh, yeah, this is a waste. Remove it. I have 1 hour. Yeah. You know, so we all have time. It's about how we're using it and how we prioritize. It's that whole concept of the people who say that they don't have time to meditate actually need it the most. They need it the most. And the people who are like, I wish I had 26 hours in a day. No, absolutely not. Because you're already sending messages to the universe of lack. You know? I wish I had. Yeah, no, you have it. Make do. Everyone has it. The most successful people have 24 hours and we have 24 hours. What's the difference? It's not like they have more time. They're utilizing their time more effectively. The most successful people have 24 hours and we who have just started off, हमारे पास भी सिर्फ 24 hours हैं. अब मान लेते हैं आप 8 घंटे सो गए या 10 घंटे भी सो गए, फिर भी आपके पास 14 या 16 आवर्स हैं. उसके अंदर से आपने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, तो आपके पास 10 घंटे हैं. उसके अंदर से आपने चलो 4 घंटे खाना खा लिया, फिर भी आपके पास 6 घंटे हैं. उसके अंदर आपने 2 घंटे टीवी देख लिया, 2 घंटे स्क्रोलिंग कर ली, 4 घंटे गायब. आपके पास 2 घंटे और हैं. उस 2 घंटे में लेट के रोने की जगह की टाइम नहीं है. वर्कआउट कर लो, मेडिटेट कर लो, रनिंग के लिए चले जाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो. हम सबके पास बहुत टाइम है. जो चीजें आपको पसंद है उनको प्रायोरिटाइज करना शुरू करो, वरना पूरे दिन रील्स एंड शॉर्ट्स में ये करने में दिन निकल जाएगा. Okay, number 4. So number 4, yeah, we spoke about sleep. Cardio. Number 4 is cardio. Yeah, people are just doing cardio. Yeah. But the truth and the science to fat loss is muscle. Now, when I say this, people say, but Luke, I don't want to lift weights. I'm not talking about big buff muscle. I'm talking about lean muscle that you can get with squats at home, lunges, push-ups, playing tennis, playing cricket, you develop muscle. That muscle requires protein. The more muscle you have, the higher your metabolic rate is. The higher your metabolic rate, you convert your body into a fat burning machine. And that's what we want. You know, people have put themselves into a box. So like, okay, I ate my 3 meals, I exercised, that's it. And I'm sedentary for the rest of the day. But you're not training your metabolic rate. I want to train a metabolism so that it works for me even while I'm sleeping, even while I'm on a 15-hour flight to New York. My metabolism is working for me. And that's how I make a fat burning machine. Yeah. You know, again, I think a lot of people know this, but they just don't get to it because the activities seem daunting or it seems like it'll be a lot of work. Right. The one thing I've learned at age 25 is choose an activity you enjoy. Yeah, absolutely. Yeah, I discovered football at 25 and it was life-changing. And that's great enough exercise. Yeah. That's a fantastic exercise. दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लूक ने टच किया है. कार्डियो, आप लड़कियों को देखते हो, लड़कों को देखते हो जो ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, जिम जाके ट्रेडमिल पे भागने लगते हैं, क्रॉस ट्रेनर यूज करते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद उठ के निकल जाते हैं जिम से. क्यों? आई कैन अंडरस्टैंड अगर आपको वेट्स उठाना पसंद नहीं है, बट अगर आप जिम से इसलिए डर रहे हो कि भाई अगर मैंने एक बार वेट को सूंघ लिया तो मेरी बॉडी बन जाएगी, मैं बहुत मैस्कुलिन बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है. बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल होता है मसल गेन करना जितना आप सोच रहे हो. जिस मसल गेन की ये बात कर रहे हैं वो बेसिक मसल की बात कर रहे हैं जो आप नॉर्मल डे टू डे यूज में अप्लाई करते हो, यूज करते हो. आप ये आईपैड उठा रहे हो, यू यूजिंग मसल. आप इस माइक पे अपना हाथ लगा रहे हो, यू यूजिंग मसल.
ऐसे मसल्स की बात कर रहे हैं जो फंक्शनल चीजों में आपके काम आए। जरूरी नहीं है आपको एक बॉडी बिल्डर की तरह बॉडी बनानी है फिट होने के लिए। अगर आपके घर में हेल्थ मार्कर्स ठीक है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, मेंटल हेल्थ, एनर्जी थ्रू आउट द डे एंड मसल्स अच्छे चल रहे हैं, यू आर लकीयर देन मोस्ट पीपल। स्टार्ट अ स्पोर्ट जिसको आप एंजॉय करोगे एंड कार्डियो अच्छा है टू बर्न अ फ्यू एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड टू कीप योर हार्ट हेल्थ गुड। बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या मसल को ट्रेन करना शुरू करो किसी भी फॉर्म में, जो भी आपको पसंद है। Of course, as everyone ages, you want to have a more holistic workout. So now with building muscle, I also want mobility. I also want flexibility. Why do you want mobility and flexibility? Because I can get stronger and more muscle, but I can also get stiffer. And I know that I'm only as young as my spine. So I have really strong people, they can't touch their toes. So you can really predict how their life's going to be when they're 45 and 50 and 55 Gotcha. with less flexibility. That's your fifth less point? mobility. Yeah. Your exercise program should be holistic in nature. Lift heavy if you want, but are you also flexible? Do as much of yoga as you want, but are you also building strength? So it's everything together that has to work. एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, मोबिलिटी, ये सब आपके फिटनेस के गोल्स होते हैं जिसपे आपको सब साथ में काम करना चाहिए। ऑल ऑफ दीज शुड गो हैंड इन हैंड, इंक्लूडिंग एंड्योरेंस। आपने देखा होगा कैसे अगर बॉडी बिल्डर्स के अंदर स्ट्रेंथ एंड मसल ऐड होता है, उनका जो मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस है वो कम हो जाता है। योगा में जिनका मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होता है, उनका स्ट्रेंथ एंड मसल इतना अच्छा नहीं होता। तो ये सारी चीजें बैलेंस करनी चाहिए जितना अच्छे से आप कर पाओ। The other point is, again, with desserts and sugar, don't put yourself into extremes. It's not necessary. And I'll tell you why. My fittest and happiest people, starting from age 98, I have clients at 98, 96, 95, 70, 80, 60, 50, 40. What are the commonalities in what they do? They live in balance. They're not in extremes, which means they will have a dessert, but their other fundamentals are also right. They're not going to get consistent with eating the dessert every day. I have my 96-year-old patient. She's ex-army, Indian Army. She has 2 pegs of whiskey every day, even at the age of 96. She's healthier than most 20s I know. Most people in their 20s, because she's kept the fundamentals in place and she's happy. Today, a lot of people are trying to get fit at the cost of their happiness. They've become so obsessed. And I believe the first ingredient to fat loss, cancer, anything is a happy mind. Because when you're happy, you send a message to your body that everything's okay. So you're in homeostasis. Homeostasis is your body's intelligence to fix you, repair you, lose the extra weight. But when I'm in disharmony because, I feel so deprived, I can't do this, I can't do that, my life is around my workouts, and you're sad. You're not in homeostasis. When there's disharmony, the biorhythm is affected, no matter what you do. And that's why people are constantly punishing themselves with more exercise. शुगर। सो पहले लूक ने बात करी है हाउ शुगर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस थिंग्स, जिनका मैंने वीडियो बहुत साल पहले देखा था एंड आई डिसएग्रीड देन। बट ये पॉइंट जो इन्होंने बोला बैलेंस बनाने का, जैसे इनके क्लाइंट्स कर रहे हैं, एवरीवन इज लर्निंग एवरी सिंगल डे। आप रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हो एंड आई डू द सेम, लूक इज डूइंग द सेम। जैसे उन्होंने बताया, बैलेंस इज की। अगर आप खुश नहीं हो जो आप कर रहे हो उसके साथ, यू विल नेवर बी एबल टू रीच योर गोल्स। कहीं ना कहीं अगर आप रोज डाइटिंग कर रहे हो, एक पॉइंट आएगा आप कहोगे भाई ये चीज मैंने खानी है, और आप वो शुरू करोगे एंड you will stop your diet, you will start eating everything and anything you missed. Whereas अगर आपने बैलेंस बनाया हुआ, आपने रखा हुआ है कि भाई ये चीज है, मेरे को ये पसंद है, इस डे पे मैं कभी कभी ये खा लूंगा या खा लूंगी, तो आप पूरा हफ्ते अच्छे से खाते हो। वो वीक आता है, वो दिन आता है, आप वो अपना डिजर्ट या अपना जो भी जंक फूड है वो खाते हो। नेक्स्ट डे यू कंटिन्यू विद योर डाइट। अल्कोहल का आई स्टिल डिसएग्री, बट अगर इनकी क्लाइंट खुश है अल्कोहल में भी, शी इज हेल्दी, देन वो अच्छे से उनका ख्याल रख सकते हैं एंड वी आर नो वन टू गिव आवर कमेंट्स ऑन दैट। Which brings me to my next point, overtraining. If you overtrain, you are going to put on more weight because you're creating a hormonal imbalance. How do you track that yourself? So number one, soreness is good. There could be a DOM effect, which is a delayed onset muscle soreness, which is good. I'm going to the gym after 5 days. I'm doing bicep curls. My biceps are going to hurt. Good. But the next time I go, it's become stronger. Now, the point is, if I'm working out, okay, and I wake up tired and fatigued, those same muscles are paining. I know I need more food. I need more recovery. I'm getting injured more often. Sprains. Today it's like, I got a great physio. But my point is, why are you getting injured so often? Part of your workouts is to make you stronger, not to get more injured. I'm playing more football, but I'm getting more injured. So either my nutrition is out or my recovery, because my muscles can only grow stronger in a state of recovery. Yeah.
इंजरीज, ओवर ट्रेनिंग, ये सब पे बहुत लोग बात करते हैं, बट यहाँ पे जो पॉइंट्स इन्होंने कवर किए हैं, आई अग्री टू अ फ्यू ऑफ देम, बट मेरे को एक बात करनी है। देयर आर चांसेस कि आप ओवर ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो सकता है आप सिर्फ ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो अगर आपको इंजरीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बहुत टाइम से ट्रेन करते आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिगिनर्स है या इंटरमीडिएट लोग हैं जिनको ऑलरेडी इंजरीज शुरू हो गई हैं, जो जिम जाके लेग प्रेस में 500 किलो मार लेते हैं बट स्क्वाट्स में उनसे 20 किलो ढंग से नहीं उठ पाते, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ओवर ट्रेनिंग इज रियल, बट अगर आप सोच रहे हो कि आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो अपने 4 सेट और 15 रेप्स के साथ, यूर रॉन्ग। वेट्स अपने थोड़े ढंग से चूज करना शुरू करो एंड एक कोच के साथ काम करना शुरू करो एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ऑप्टिमल ट्रेनिंग इज। उसके बाद अगर आपको फील होता है कि आप 2-3 दिन तक सोर हो या आपके मसल्स रिकवर ही नहीं कर रहे या आप पूरा दिन फटीग्ड रहते हो, कोई और चीज करने की एनर्जी नहीं होती, या आपको बहुत जल्दी जल्दी इंजरीज हो रही हैं, स्प्रेन्स हो रहे हैं, देन देर आर चांसेस कि आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो। उसके अलावा आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना शुरू करो। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट विटामिन्स और मिनरल्स जब तक अंदर नहीं जा रहे, प्रोटीन भी आपका मसल बिल्ड करने में हेल्प नहीं करेगा। But there can be no success without sacrifice. A lot of people out there on social media pretend, oh, you can do it all and no sacrifice. But there can be, it's a law, it's like a law of nature. There can be no success without sacrifice. It's impossible. We spoke about neuro programming, I think, earlier. Neuroplasticity, neuro patterns, neural patterns. 2,000 years later. अब रणवीर ने यहाँ पे सेम टेक्निक यूज करी है, जो क्लिक बेट करते हैं वो, टू गेट मोर पीपल इन, क्योंकि अभी तक 7 या 6 पॉइंटर्स आए हैं जो मिस्टेक्स हुई थी, उनके बारे में बात हुई है। उसके बाद टॉपिक कहीं और निकल गया है, बट बात सही हो रही है, काफ़ी अच्छी बात हो रही है कि आपको हर बंदे से सीखना चाहिए, बट अपने ऊपर ट्राई करना चाहिए। हर जगह से इन्फॉर्मेशन लो, बट देखो आपके लिए क्या काम कर रहा है, वरना ऐसे ही घूमते रह जाओगे एक बंदे से दूसरे बंदे में। You have any last point? I think whatever you do for fat loss, okay, I know we want to look good today, all of that stuff. And my point is, while you're also aiming towards building that body, ask yourself every day, am I also building happiness? Because I'll tell you, I have some of the thinnest people and the most amazing physiques depressed. What's the point of a great body? What's the point? Are you just eye candy, but you go home and you're miserable, you're depressed? So my point is, lose that weight, but are you also building happiness? Or have you said that when I lose weight, I'll be happy? Then you've put a condition and you are always going to be miserable. So what's the CTA right now? Is it meditation? Like, is that? I would use 2 words, 3 actually. Meditation, mindfulness, reflection. I'll give you a choice of 3 things because they're both beautiful, powerful. They're actually all the same in different ways. But some people, I can't meditate. Can you reflect? Yes. Start with reflection. You mean writing? Writing, thinking, reflecting. Okay, this is a point that I love. ये last point है. So basically 8 mistakes बताई हैं उन्होंने जो लोग करते हैं. Last वाला इन्होंने बताया कि people compromise their happiness just to get to their goal. वो इतना ज़्यादा कंडीशन कर लेते हैं कि अगर मैंने ये कर लिया तो मैं खुश होऊंगा, अगर मैंने इतना मसल बिल्ड कर लिया तो मैं खुश होऊंगा। इसकी वजह से जब बॉडी डिस्मॉर्फिया हिट करता है या जब वो अपना एग्जैक्ट जो उनका मॉडल का गोल रखा हुआ था उन्होंने वहां नहीं पहुंच पाते, वो इतने उदास हो जाते हैं, उनको लगता है लाइफ में वो कुछ मिस आउट कर रहे हैं। 3 चीजें बताई हैं उन्होंने, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन, जिसको मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करना चाहूंगा। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन एक तरह से सेम होते हैं। ध्यान लगाना, अपनी सांस पे ध्यान लगाते हो आप, अपने ऊपर ध्यान लगाते हो आप, अपने बीइंग पे, अपने लिविंग पे ध्यान लगाते हो आप, एंड प्रेजेंट में जीना सीखते हो। रिफ्लेक्शन इज समथिंग सिमिलर एज वेल। आपने जो थ्रू आउट योर लाइफ किया है, थ्रू आउट योर डे किया है, उस पर आप रिफ्लेक्ट करते हो, अपनी लाइफ पे आप रिफ्लेक्ट करते हो, अपने आप से बात करते हो। आजकल इतनी सारी हमारे आसपास आवाजें होती हैं, शोर होता है, टीवी होता है, रील्स होती हैं, शॉर्ट्स होती हैं, कि हम अपने आप से बात करना भूल जाते हैं। आंखें बंद करो, सांस लो, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करो, टेल योरसेल्फ हाउ अमेजिंग यू आर एंड वर्क विद दैट। रोज ये करो। मेरे हिसाब से जो भी बातें लूक ने करी हैं इस वीडियो में, दे वर राइट, एंड मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा जिसको मैं पॉइंट आउट करके बोलूँ कि नहीं 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 ये तो गलत है। वो फिर सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए नकली कंट्रोवर्शियल चीजें करना होता है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहूंगा जो फर्स्ट पॉइंट था उसको, वेइंग स्केल को। लोग रोज वेइंग स्केल पे चढ़ते हैं, रोज उनका वेट फ्लक्चुएट करता है। मोटिवेशन, डीमोटिवेशन ये उनके साथ रोज होता है, देख के कि कैसे उनका वेट ऊपर नीचे जा रहा है। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में 1 दिन रखो जहां आप अपना वेट लेने वाले हो, एंड हर हफ्ते उसी 1 दिन पे, हो सकता है संडे हो सकता है मंडे हो, एम्प्टी स्टमक अपना वेट लो, उसको लिखो, एंड अगले हफ्ते फिर से वैसे ही देखो। दैट वे यू विल बी एबल टू जज योर वेट
बेटर। उसके अलावा अगर आप अपना फैट लॉस प्लान बिल्ड करना चाहते हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट डाल दूंगा, वहां आप अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करके अपना खुद का मील प्लान बना सकते हो फ्री में। नेक्स्ट रिएक्शन या नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे करना है कमेंट करके बताओ। आप लोग लिंक भी डाल सकते हो उस वीडियो का, एंड आई वुड लव टू टॉक अबाउट दैट। और अगर नए हो तो इस वीडियो को लाइक और हेल्थ बाय के लोगों को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बी सेफ, लव यू गाइज।